एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑब्वियसली वी गोना होल्ड आवरसेल्फ टिल द रिप्रोडक्शन इन know how the reproductive organs work in males, and in the next lecture we're gonna go with the fertilization and reproduction of the female reproductive system. So let's start the today's topic. Hi, my name is Manu Kumar and let's start reproduction in human beings. So first of all, going to the now reproduction जाने से पहले हमारा क्या आता है? Reproduce करने से पहले आपका एक एज आता है. That age is obviously you attain the puberty. मतलब क्या कि आपकी बॉडी को आप रिप्रोडक्शन के करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होने के लिए एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं. तो उस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस सारा कुछ होता है, उसके अपन क्या कहते हैं? प्यूबर्टी. Puberty may be defined as the period of the time during which the body of the individual reaches the sexual maturity. ठीक है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाता है. आप किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को करने के कैपेबल हो पाते हैं अनलेस अनटिल आपकी अगर प्यूबर्टी अटेन हो रही है. तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं एंड वी ऑलरेडी नो द चेंजेस. Okay, you all are teens and you are expecting those changes in your body, and anyway you can feel those changes. तो वो चेंजेस क्या हो कहलाता है बच्चा? वो चेंजेस वाला जो पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्यूबर्टी पीरियड कहलाता है. ठीक है. So common changes that we see in both boys and girls. Okay, that's common for both. So that what it is, obviously thick growing of hair in the new parts of the body. Obviously you can see somewhere in armpits and in the genital area, near between the thigh, and which can also become darker in color because dark pigment काफी ज़्यादा रहता है. Okay, thinner hair can also appears on the leg and arms. ज़्यादा hairy होने लगता है जिस वो अगेन ये जीन्स पे भी डिपेंड करता है. किसी के जेनेटिक्स में ज़्यादा हेयर्स होते हैं तो उनके भी बालों, ये हाथों पे और पैरों पे ज़्यादा हेयर्स आते हैं, किसी के कम आते हैं. सो इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, एंड ऑब्वियसली skin become oily. It happens naturally. Skin becomes oily most of the time, and it's like they have to use face wash every time. You might develop pimples, तो पिंपल्स भी हो जाते हैं. एंड आपने हिमालय फेस वॉश वाला एड भी देखा होगा, तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत. ओके, यू मे बिकम कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट बोथ योर ओन एंड योर बॉडी इन न्यू वेज. सी, ये बहुत बहुत ही मतलब अगर आप याद करो आपका जब बचपन का टाइम रहा होगा, देन हाउ यू यूज्ड टू डू, you sleep and you sleep like you I die, you know. You don't even care. अगर मम्मी कभी उठा के एक बेड से दूसरे बेड पे भी रख देती है तुम्हें नहीं पता चलता. बट नाउ व्हेन यू आर ग्रोन अप, यू आर अ टीनेजर, तो आपको अभी कोई ऐसे करे तो यू विल बी एबल टू नो कि किसने उठाया. यू यू आर वेरी कॉन्शियस. तो ये कॉन्शियसनेस भी आपकी आ जाती है. वेरी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी, हाउ द पीपल टचिंग यू, how the people holding you. It's very active things that going in our body. Okay, sometimes it become aggressive, obviously. Even not for just boys, and हमेशा when it comes to the aggression it goes with the boys, but नहीं, ऐसा नहीं है. Even the girls get they're getting irritated. They are also aggressive. They don't want to listen others, है ना. और ये एज, इस एज में इंसान रहता है, they have the whole lot of power but no control at all on their parts. Okay, तो ये तो कॉमन चेंजेस की बात करी थी हमने. ओके, उसके बाद changes that takes place especially only in the girl, obviously. So their breast size begin to increase. Obviously the girls start to menstruate. Okay, अब menstruation की बात हम आगे करेंगे when we will do the fertilization part. ये कैसे होता है, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे. Okay, breast size begins to increase with the darkening of the nipples. area पे dark हो जाता है and their hips get broader. So there is nothing that you don't know. Okay, and we will talk about this part in after fertilization. Okay, what happens after fertilization if the fertilization do not take place? I'll take this point and then we will discuss this point over there. Okay, so changes that takes place in boys, obviously you can see the thick hair grows on face, that beard,
Okay, their walls get cracks, and you can see the Adam's apples over here. Okay, this bursted. Okay, and हम लोग कहते हैं जब ये एडम्स एप्पल आपका पूरा ऐसा फट जाए, तो स्पेशली जो टीनेजर्स के बहुत बच्चे होते हैं और इनका ये जब फट रहा होता है एडम्स एप्पल से या एडम एप्पल से भी आ रहा, their voice is so irritating. I don't want to hear their voice. Even मेरा voice भी इतना tough है. Okay, but that make you a man ultimately. Okay, and your penis occasionally begins to erect in large and either the daydreams. और हम लोग ये भी समझेंगे अभी जस्ट कि ये पेनिस कैसे enlarge हो जाता है, what happens, what makes it to become enlarged and harden, erect. So not daydreams or night, it happens, it's very normal. And don't get embarrassed. Okay, it's for the boys. No one is there to listen them. Okay, so आप embarrass मत हो, it's normal, it's the part of the life, it's the things that the nature has given to you. Okay, all the changes takes place slowly. It's not that कि आज सबको आ जाएगा, and it again varies from person to person. किसी को हेयर सही है, दाढ़ी जल्दी आ जाती है, किसी को लेट आती है, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये सारा कुछ जीन्स पे, सारा कुछ पर्सन टू पर्सन पे बहुत तरीके से वैरी करता है, आपके इन्वायरमेंट पे। जैसे कोरियन पीपल डू नॉट हार्डली दे हैव अ बियर्ड। ओके, तो ये सब कुछ अलग अलग we are not different species, again I'm telling you, but we have the different body structure, different things, so it depends on all those things. it कि एक दिन या एक इंसान एक environmental factor पे नहीं डिपेंड करता है, सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, and then the all things takes place. Okay, as we have the different shapes of nose, ears, इसी तरीके से different shapes or different kind of size of penis, breast, or even the structure भी अलग अलग होता है. Okay, so it's not like कि इसका ऐसा है उसका वैसा. We should not compare anyone because this is all the nature that we has given us. Okay, तो ये एक बहुत important बात है. Size even it's varies again from gene to gene, place to place. So it's okay, it's normal, it's best. Okay, why does the body show the sexual maturation at the age? अब देखिए क्यों दिखाता है ये? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे बॉडी को ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने के लिए हमारा बॉडी तैयार ही नहीं होता है। तो हमारे बॉडी को प्रॉपरली उस लेवल तक तैयार होना पड़ेगा सो दैट कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर पाए। ओके, so sexual maturity and another physical maturity that occurs during the time of puberty are the result of the various hormonal changes. Again, हार्मोनल चेंजेस अगर सपोज दैट कि बहुत बचपन में ही होने लगे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू कैरी ऑन बेबीज एंड ऑल, है ना। बट लड़के भी उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर नहीं है, एंड ऑब्वियसली हम लोग व्हेन वी स्टार्ट इस प्रोड्यूसिंग स्पर्म इवन, तो उस समय भी हम लोग वी आर नॉट कैपेबल मेंटली, है ना। हमें मेंटली फिजिकली हर तरीके से कैपेबल होना पड़ता है टू रिप्रोड्यूस, एंड देन ओनली वी कैन रिप्रोड्यूस। ओके, तो आपको हर सारे कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है। ओके, सो हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं सारा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इनिशियली द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल बॉडी इन्वॉल्व इन ग्रोइंग टू द एडल्ट साइड। जो सारा रिसोर्स हम खाना खा रहे हैं तो हमें पहले बड़ा हमारा बॉडी मैच्योर तो हो जाए, तब तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे या सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे। तो पहले हमारे बॉडी को मैच्योर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड देन ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, फॉर एग्जांपल द कॉम्बिनेशन ऑफ FH एंड LH prepares the girl's body to be prepare for her pregnancy। तो प्रेगनेंसी के लिए फर्दर उनकी बॉडी तैयार होती है ऑब्वियसली। अगेन सारे हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन और मेल्स में टेस्ट्रोजन्स, these works all together and let your body to get prepared for for to reproduce, obviously to reproduce simply. Okay, so here we're gonna discuss that the male reproductive system, and we have the different parts, and we're gonna talk about all of them separately one by one. Okay, so this is as you can see what happens over here, we can discuss first. Okay, so here the journey of sperm starts. Okay,
and this is obviously the testis from where the sperm. Okay, this is the scrotum and all the genital parts of the male is outside of the body. As you can see, this is outside of the body from here. Okay, this is obviously the penis and this is the testis. And you can see the above the testis, this is testes and the singular of testis. Okay, and there is scrotum in the sac-like structure outside the pouch way in which the testis is there. Okay, and testis obviously it produces sperm over here, and epidermis is the obviously it gives some uh, more additions to the sperm, and then obviously then it goes this pipe, black pipe, as you can see, it goes to the here, and here some seminal vesicles that give the fluidity to the sperm, and prostate gland, additional again nutrition and all. Okay, and then it goes here, from here then it's coming to penis, and obviously then it will go to the female body or after ejaculations. So we're gonna discuss all about them separately. So let's start the male reproductive system, and let's understand each and everything. Okay, so first of all, testis. So what is testis, bacha, and how it works? Okay, so obviously uh, there are two pair of testis, and वो बाहर बॉडी के लटके होते हैं, और वो जो पाउच होता है उससे बोलते हैं अपन स्कॉटम. ओके, ये ओवल शेप्स के होते हैं और जिसकी साइज अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड. ओके, जनरली हमारा जो लेफ्ट साइड का टेस्टिस होता है is slightly lower than the right one, थोड़ा सा ऐसा होता है. It's again new normal, but हम initially हो सकता है तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाए, because when we get conscious about our body तो हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो गड़बड़ है कुछ, बट ऐसा नहीं है. अगेन ये फिर नॉर्मल है. आप इस चीज़ों को बहुत प्यार से समझेंगे, है ना. एंड स्पेशली फॉर द बॉय दैट यू नीड टू वेरी कॉन्शियस. होता क्या हम ना लड़कों में कि अपने पास भी उतना ही नॉलेज है, अपने दोस्त के पास भी उतना ही नॉलेज है, एंड वी डिस्कस एंड वी गेट इंस्पायर्ड विद आवर फ्रेंड्स. ओके, तो दिक्कत यहाँ पे है, और हमें अपना समझना होगा कि uh, जो एग्जैक्ट नॉलेज है, बिकॉज हमारे बुक में भी ये देने का मकसद भी यही है कि हमें पता हो कि सही नॉलेज क्या है, हम अपने बॉडी के बारे में और अच्छे से जान पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ, ताकि हमें जो सेल्फ डाउट होने लगता है वो ना हो. और हमारा भी मकसद यही है कि मैं सी बॉयज़ के पास क्या होता है कि दे ऑलवेज गो थ्रू देयर फ्रेंड्स, पेरेंट्स जनरली बात नहीं करते, बट व्हेन इट comes to the girls, then obviously when they have the menstruation and all, they go to the family, and the family at least listen to those things, but उनका भी up to extent हमेशा नहीं होता. तो हम सबको समझना है कि इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. इट्स अ काइंड ऑफ थिंग्स. इफ इट इज हैपनिंग इट्स नॉर्मल. इफ इट इज नॉट हैपनिंग देन इट माइट बी, बट इट्स अगेन कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, कितना ज़्यादा कितना कम, बट होना सबको है. इट्स अ नॉर्मल थिंग. ओके, अगर स्टिल नहीं हो रहा विद अ पीरियड ऑफ टाइम, then obviously you should go to the doctor, you should consult the doctors. Okay, so इसका primary function क्या है? To produce testosterone, and obviously that's the male sex hormone produce करना, and producing a sperm, and carries the man's genes. तो हमारे genes तो males के genes obviously sperm के थ्रू ही जाते हैं, and they fertilize the ova, जिसकी बात अगले वीडियोज में होगी कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ओके, उसके बाद हमने देखा था कि वास्ट डिफरेंस क्या है. वास्ट डिफरेंस देख लेते हैं क्या है. ओके, तो वास्ट डिफरेंस जब टेस्टिस से निकलता है तो वास्ट डिफरेंस में जाता है, एंड वास्ट डिफरेंस इज लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड यूरेथ्रा. आप यहाँ पे भी देख लो एक बारी, है ना. यूरेथ्रा इज हियर, वेयर यूरेथ्रा, दिस इज वास्ट डिफरेंस. हियर दिस इज वास्ट डिफरेंस. Okay, and I have marked everything, you know, so you can see from here. Yeah, so it lead to the vast difference, and ये सारा कहाँ से कहाँ तक जाता है. It receive the duct from the seminal vesicles. Seminal vesicles इसमें अपने जो भी उसके प्रोडक्ट्स है, एक्चुअली seminal vesicles जो fluidity प्रोवाइड करता है, and open into urethra as the ejaculatory duct.
यूरेथ्रा ऑब्वियसली वो पाइप है जिसके थ्रू हमारा जो कॉमन पाइप है ना, मील्स रिप्रोडक्टिव पार्ट का या पेनिस का, ये कॉमन पाइप है जिसमें आपका यूरिन या तो फिर ये स्पर्म दोनों ही सेम पाइप से जाता है, सेम पैसेज से जाता है। वहीं पे फीमेल्स में दे हैव द सेपरेट थिंग। ओके, वास्ट डिफरेंस ट्रांसपोर्ट द मैच्योर स्पर्म। ओके, स्पर्म जो मैच्योर होता है उसको कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, इन प्रिपरेशन फॉर एजुकेलेशन, हमने ejaculation तक के लिए रेडी करता है। इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग द spermatozoa, that's obviously the sperm, okay, that's obviously the sperm from the epidermis से उठा रहा है, epidermis to ejaculate ducts, ये पूरा ही वास्ट डिफरेंस है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा पाइप, ये जो ब्लैक पाइप देख रहे हो यहाँ तक है ना, यूरेथ्रा के पास लाके छोड़ रहा है। ओके, देन इट्स कंप्लीट पाइप इन यूनिट वास्ट डिफरेंस। ओके, पोस्ट्रेट ग्लैंड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एंड पोस्ट्रेट कैंसर्स वगैरह का नाम सुना होगा ने ये। ओके, तो पोस्ट्रेट इज अ वॉलनट साइज ग्लैंड, वॉलनट size, okay, small one. Okay, located between the bladder and the penis. Okay, the posterior is just in front of the rectum. Okay, rectum is the anus part actually from. Okay, this anum. Here you can see this is the green one in the posterior gland. Okay, this one is posterior gland. Okay, just above the anus and the penis and here you can see. Okay. The urethra runs through the center of the prostate gland. Okay, urethra आपका जो prostate gland के बीचों बीच ऐसे निकल रहा है from the bladder to the penis, the letting the urine to flow to the body. और इसी का अगर जो हमारा जो सेम पैसेज होने की वजह से इसका कंट्रोल होना पड़ता है। जो यूरिन पास होने का है रास्ता वही है और आपका तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है कि इसको भेजना है या इसको भेजना है, दोनों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है ना। So prostate gland fluid that nourishes and protect the sperm. ये अपना secretion देके क्या करता है कि स्पर्म को नरिश करता है, उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, स्पर्म हमारा खराब ना हो किसी तरीके से। ओके, सेमिनल वेसिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, seminal vesicles are the pair of glands along the back of the bladder, base in man and the part of the male genital system. The main function इसका क्या है कि देखो यार, मेन फंक्शन इसका ये है कि ये इसको सीमेन को सीमेन आना मेक्स अप सीमेन जो कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज बिकॉज स्पर्म नीड टू मूव इवन जब फीमेल्स बॉडी में जाता है तो वो जो फ्लूइडिटी होता है दैट्स ओनली इट कैन गोज टू द ओवा। वो फ्लूइड ऐसे 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 करते चलते रहते हैं। इवन आप माइक्रोस्कोप्स पे भी देखोगे, मैं ट्राई करूंगा एक छोटा सा वीडियो अगले एक इसमें एम्बेड करने का, सो दैट आई कैन शो यू दैट स्मॉल वीडियो ओवर हियर। ओके, कि माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। ओके, एंड विच इज रिलीज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। अगेन सारा कुछ तो इजैकुलेशन के बाद हम जरूर देख पाते हैं, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते। इपिडर्मिस जो जस्ट टेस्टिस के ऊपर ऐसे लगा हुआ था, है ना। So it's a coil of three sections, okay, and it sits inside the scrotum, जो हमारा पाउच है जो नीचे वाला, okay, and testis के ऊपर लगा हुआ था, okay. The sperm move from testis to epidermis and into the vas deferens. Obviously ये सारा process पता ही कैसे हो रहा है। During the time moving through the epidermis, sperm mature and get the additional function, okay, and in particular they gain the ability to propel themselves forward. Okay, it again give the additional ability to propel themselves forward. It helps in moving the sperm forward, but simple सा अभी नहीं हमें समझना है। Okay, कि ये भी sperm को वहां से टेस्टिस से निकाल के एक तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है, सिंपल सा बात। Okay, penis, or penis obviously it's a male external genital organ that we can see actually from the outside। और इसमें क्या है कि भैया इसमें तीन सिलेंड्रिकल स्पेसेज होते हैं, ठीक है ना। एक तरह से कह सकते हो थ्री इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जिसमें वो हॉलो होते हैं एक तरीके से, है ना, हॉलो होते हैं और टिश्यूज जब हॉलो है तो वो लूज है। But what happens when normally what happens is the penis keeps getting erected, तो वो erect कैसे हो जाता है बच्चा,
एक्चुअली उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है एंड व्हेन इट द ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोज ओवर देयर दैट इट गेट इरेक्टेड। ओके, तो इन तीनों का पाइप का नाम क्या है, इन तीनों सिलिंड्रिकल स्पेसेस का नाम क्या है? कॉर्पोरा, car carvenosa, and side beta, and third one is sinus. Okay, it's called corpus spongiosum, cover the urethra, and the penis is made up of muscles called spongiosus, no? Bulbo spongiosus muscle, bulbo spongiosus. This is spongiosus. Okay, muscles. ओके, bulbous spongiosum मसल्स एंड ऑब्वियसली इसके अंदर ये तीनों टिश्यूज के पाइप्स या सिलिंड्रिकल पाइप्स कह सकते हो आप। ओके, जब ये इसमें ब्लड फिल हो जाता है तो ये इरेक्ट हो जाते हैं। द टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। ओके, बिकॉज अगर इरेक्ट नहीं होगा तो इट विल नॉट गेट इंसर्टेड इन द फीमेल्स बॉडी एंड ऑब्वियसली हमारा स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। The foreskin cover the inland end of the penis called glans penis. Okay, the foreskin आगे पेनिस के होता है ना, foreskin ऐसे करके, है ना, जो तो वो foreskin क्या कहलाता है? ग्लैंस पेनिस। ओके, चलो, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, अब देखिए ये यूरेथ्रा हमने एक बार फिर से मैं दिखा दूं जरा कहाँ पे है यूरेथ्रा ताकि आप रिलेट कर पाए। हाँ, ये है अपना जो पाइप है, लास्ट पाइप है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन। अब स्पर्म स्पर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कॉमन पैसेज है हमारा, जहाँ पे आपका यूरिन और स्पर्म दोनों ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस रास्ते में, ठीक है। So it's a tube structure that connects the urinary bladder, urinary meatus. In male, the urethra travels through the penis and involves mainly the two functions. In region include the urinary tract that takes the urine from the bladder when the semen is ejaculated, or where the semen is ejaculated. Okay. Semen इधर से and prostrate beneath the bladder covers the urethra. Okay. It also covers the urethra. Then prostrate grow larger with the age. If the prostrate grows too much, okay, and it can block the urine passage through the and responsible for some the urinary symptoms. तो कभी कभी ना वो prostrate जो हमारा walnut size वाला था, अगर वो कभी बड़ा हो जाए, then it's like कि वो भी वो वही प्रोस्टेट और वो फर्दर अगर कुछ और भी प्रॉब्लम करता है देन ऑब्वियसली इट लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर। तो ये सारी चीज़ों से हमें बहुत अभी ये सब चीज़ें हमारे बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं होती है बट वी शुड यू नो अवॉइड एनी hectic life. Okay, we should be very conscious about our life. We should exercise properly, we should eat good food, so obviously your life will be balanced, and obviously balanced diet, everything is very very important for your life, okay, and for being healthy human being। okay, स्कॉल्टम, जो अभी ये लास्ट है ऑब्वियसली हमारा जो आखिरी पार्ट है स्कॉल्टम, जो कि ऑब्वियसली सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर होता है। एंड इसके बाहर होने का बहुत खास बात ये है, इफ यू एवर टच योर स्कर्टम यू फील दैट इट्स कोल्ड इवन। ओके, यू कैन फील दैट इट्स कोल्ड। ओके, हमारे स्पर्म को ठंडा रहना पसंद है, इट ऑल्सो यू फील इट्स वार्म, बट स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म जो सेमिनल वेसिकल्स वगैरह के साथ आता है तो सीमेंस वगैरह के साथ मिक्स होके आता है देन इट सीम्स वार्म। बट क्या है कि हमारे स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, वरना हमारे स्पर्म जिंदा नहीं रहेंगे या जो भी उनमें है ना वो नहीं रह पाएगा। तो लोअर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना था, दैट इज अराउंड 10 डिग्री सी ओनली। सो 10 डिग्री सी मेंटेन करने के लिए पहले तो वो बॉडी से बाहर रहता है, इट मेंटेन द टेम्परेचर। ओके, suitable sperm creation and the muscles in the wall allow the testes to hang from the body and shrink to pull them closer to protection for protection and warmth। ओके, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है ठंड में और गर्मी में। ठंड गर्मी में इट गेज लोअर, ओके, एंड ठंड में इट कम्स क्लोजर। ओके, तो ये आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है नाउ,
कि गर्मी में ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा होती है, देन इट गोज़ अवे सो दैट कि आपका बॉडी ठंडा रहे। ओके, एंड स्पर्म स्पेशली कम कम टेम्परेचर में ही अच्छे फॉर्म होते हैं। हाँ, तो और वहीं पे जब ठंड होती है तो ये फेज का सो दैट ही थोड़ा-सा अपना टेम्परेचर मेंटेन करें, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। ओके, एंड उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश की। एक-एक जो और पार्ट्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, उसको समझने की कोशिश की है। अगेन एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि this chapter is for you. You need to understand each and everything. Don't take it otherwise. Don't take it as a fun. It's a serious concern. You should understand all these facts. Okay, it's about you. It's about us. Okay, so hope you will like the session. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind. Jai Bharat.